হ্যালো বন্ধুরা, যুদ্ধ কি লেগে গেল? আকাশে কালো ধোঁয়া দেখে তোমাদের হয়তো এমনটাই মনে হচ্ছে, কিন্তু না, এটা যুদ্ধ নয়, এটা বায়ুসেনার প্রদর্শন। এই প্রথমবার গুয়াহাটির পর বরাক উপত্যকায়ও প্রদর্শন দেখিয়েছে বায়ুসেনা। গত 13 নভেম্বর থেকে 15 নভেম্বর পর্যন্ত 3 দিন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে সারাংয়ের হেলিকপ্টার টিম অংশ নিয়েছিল। 13 এবং 15 নভেম্বর ছিল সারাং টিমের এয়ার ডিসপ্লে। মাঝের 14 নভেম্বর আয়োজন করা হয় স্ট্যাটিক ডিসপ্লে অফ এয়ারক্রাফট অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট। এয়ারফোর্স স্টেশন শিলচর কুম্ভীর নামে প্রদর্শনীটি চলে। প্রদর্শনীতে সারাংয়ের হেলিকপ্টার টিম চমৎকার সব কসরত দেখিয়েছে। এই দৃশ্যগুলো তাড়িয়ে উপভোগ করেছেন বরাক উপত্যকার মানুষ। এত কাছ থেকে সরাসরি এই প্রথমবার তারা বায়ুসেনার প্রদর্শনী দেখতে পেরেছেন। এই প্রতিবেদনে আমি সারাংয়ের যাবতীয় প্রদর্শন তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রদর্শনী শেষে কী কথা বলেছেন সারাংয়ের টিমের সদস্যরা, সে তথ্য তুলে ধরেছি। এছাড়া ছাত্রছাত্রীরা এই প্রদর্শনীর পর কীভাবে সারাংয়ের দলের সদস্যদের অটোগ্রাফের জন্য ঘিরে ধরেছে, সেসব দৃশ্যও রয়েছে এই প্রতিবেদনে। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। তাহলে এই প্রতিবেদনটা তোমরা দেখতে থাকো। ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। জয় হিন্দ। I'm Squadron Leader Nishank Avasti. I'm part of the Sarang Helicopter Display Team of Indian Air Force. And with me is I'm Flight Lieutenant Pallavi Sangwan. I'm the commentator of the Sarang Helicopter Display Team. I am Squadron Leader Gokul. I'm also part of the Sarang Display Team. So it was our pleasure to perform here in the Kumbhgram skies, and the kind of response we have got from the school kids and from the NCC cadets they came, and from the people who came all the way from Silchar. And definitely we are very thankful to the station administration who arranged everything so well. And all efforts we have made to come here. We have come from Tamil Nadu. Our team is based in Tamil Nadu, so coming all the way from there to this part of the northeast, I think we have achieved our aim. I hope so that through our display we have inspired the people here to join the Indian Armed Forces. Yeah, this team is the only 5 military helicopter display team. There might be other private helicopter display teams, but talking about the military helicopter display team, so this is the only one. You might see number of fixed wing aircraft display teams, but in terms of helicopters there are not many, and in military definitely this is the only team in the entire world, because as you can see and imagine how difficult it is to fly even the helicopter. It is even to hold. It is very difficult to hover at some point. It is very difficult for a helicopter, but doing such kind of aerobatics, I like hats off to these pilots. They do such a wonderful job with such kind of precision. right. Yes, this is another speciality of our aircraft. These are the HAL made, indigenously made aircraft. So that's how we represent as a team the prowess of the Indian Air Force, and at the same time the Atmanirbharta of our nation. So our every maneuver, each and every maneuver has its own significance. So like in the initial, when after arrowhead we make wine glass, so it is like we raise the toast to the happiness to the occasion. And then when in some, for example, India, so that shows the Atmanirbharta of our nation. For example, the heart maneuver, that heart we make, it is we show, that is our way of showing love to the people which they have given to us, and then way of reciprocation from our side. And then the Sarang split maneuver, for example, it's all the examples I'm saying. For the Sarang split, in that we present a salute to the nation, the kind of this thing we are proud of on our nation. So that is our dedication, our tribute to the nation. That's it. I don't think now it is a gender specific environment. It is more of the capability based this thing. Skill, if you have skills, if you have the talent, you can reach anywhere. For the girls, I have only one thing to say, that please dare to dream and dream big, and make all the efforts to achieve those dreams. Do not shy away from the hard work. Don't think that it will not be achievable. Everything is possible in this world, but yes, your dedication, your perseverance is required to go that far and to achieve what you have dreamt of. एक और बार पल्लवी मैम मैम एक और बार वाओ
हम लोगों को रुकने के लिए Thank you so much. Thank यार तुम्हारे हाथ में लग जाएगा। आप थोड़ा रुकिएगा। Hard work, strong determination. लाइफ में जो सोचा ना ये करना है वो करना है, क्योंकि कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। How that? You're sitting next to me. Only hard work. Dream. Possible dream. What do you? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। प्लीज शेयर योर फीलिंग्स, कैसा लगा? बहुत अच्छा। सब केवी के स्टूडेंट्स हैं? पायलट बनना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? प्रज्ञा। आपका? सुनहरी। कौन से क्लास में? 11th साइंस। साइंस में। यहीं पे बनना चाहते हैं ऐसे? हाँ। क्यों बनना चाहते हैं? अपने नेशन के लिए सर्व करना। आज क्या सबसे अच्छा लगा? जो उनका करेज है और जो वो लोग मतलब काफी ज्यादा मेहनत करते हैं वो लोग हमारे नेशन को मतलब सर्व करने के लिए। उनका स्टाइल? हाँ, स्टाइल बहुत अच्छा है। पांच हेलीकॉप्टर को जमीन से हवा में उड़ान भरने से लेकर उनकी सुरक्षित वापसी तक की भारी जिम्मेदारी से रहेगी। एक दूसरे के आमने सामने एक समान स्तर पर एक दोनों ओर से आते हुए मानो एक दूसरे को छू कर गुजरेंगे। बिना बंदूक को झुकाए देखते रहिए लेवल मैच के लिए। Everyone now get ready to witness the unmatched precision of our pilots even closer to you. This is one of those times where you will hold your breath and wonder how they pull it off with such finesse. Soon both the pairs rushing head on will cross each other's flight path executing a coordinated pickup with just a hair's breadth of separation. तो अपनी नजर दोनों बनाए रखें लेवल क्रॉस के लिए। प्रदर्शन करेंगे। लुक for high speed cross. अनेक धर्म, अनेक रंग, अनेक भाषाएं और इस अनेकता में एकता ही हमारे भारत की पहचान है। And there comes a Cupid number 5 crossing straight through the beautiful star crowd. Now, ladies and gentlemen, all eyes to the front as the team is rolling in for the grand finale of today's spectacular display, the Sarang Split on the soul-building tune of Vande Mataram. This finale is dedicated to the grand success of Operation Sindoor, a glorious chapter written by the Indian Armed Forces with courage, precision and pride. As the formation splits, the leader will pull up to present a salute to the nation. We shall